Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I shall be bringing you another DIY which I know you guys love and I love them too. और क्योंकि इतनी सर्दी रही है कि स्किन और बालों का हाल हो जाता है, और जनरली भी क्योंकि मेरे बाल एक तो कर्ली हैं तो वैसे भी प्रोन टू ड्राइनेस हो सकते हैं, और मैं स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली स्टाइल कराती हूँ अपने बाल। तो उनको ये शाइन जो आप देख रहे हैं, शाइन के लिए फिर मैं एक मास्क लगाती हूँ घर पे, जो मैंने सोचा मैं आपके साथ आज शेयर करूँ। मैंने कल लगाया था and I can already see that every time I use it, I feel like my hair has such a lovely kind of shine to it. So I thought let's show you how I make it, and it's a very easy mask to make. You can make it at home, quick and easy. So I'm going to show you what ingredients and how I'm going to make it. So always for my hair masks, I always use a bigger bowl because मेरे अपने बाल ज़्यादा हैं, तो I know कि काफ़ी प्रोडक्ट लगेगा, तो मैं उसको इसमें मिक्स करूँगी और साथ साथ प्रोडक्ट्स का बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं लूँगी योगर्ट, ठीक है। So yogurt is a great like hydrating ingredient for hair masks, you know, that I use a lot of. And ये इस योगर्ट को क्या किया है, हमने बिल्कुल फेंट दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल फेंटा हुआ, I don't want it to fall, actually it's about to fall. बट बिल्कुल फेंटा हुआ दही अभी मैं पोर करूँगी, तो आप देख लें बिल्कुल पतला, ऑलमोस्ट आई गेट इट लाइक whisk it in my ब्लेंडर, कि वो बिल्कुल पतला हो जाए, कोई उसमें लम्ब्स और सब ना हो, कोई लगाने में आसानी होती है। लम्ब्स के साथ दही का क्या होता है कि एक तो वैसे भी जब आप ये मास्क लगाएंगे तो आपने इवेंचुअली या तो मैं उस पर एक अपनी कैप, शावर कैप पहन लेती हूँ, या मैं एक टावल, वार्म डैम्प टावल रैप कर लेती हूँ, या मैं इस तरह एक जगह पे बैठ के ना, समटाइम्स आई इवन रैप लाइक वन ऑफ माई लाइक स्कार्फ्स ऑन इट ऑन माई हेयर, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोडक्ट ड्रिप करता है, तो यू डोंट वांट लाइक क्लम्प्स ऑफ दही इन योर हेयर दैट यू ट्राई टू टेक आउट। सो मेक श्योर कि अगर आप दही यूज़ कर रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से फेंटें। तो मैंने उसको एक प्याला लिया है, 1 bowl ऑफ योगर्ट, एंड दिस कैन बिकम मोर एंड लेस डिपेंडिंग ऑन जो सारी क्वान्टिटीज़ हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके बाल अगर कम है तो आप इसको आधा कप भी ले सकते हैं, तो उस हिसाब से आप ज़रा वो चेंज करेंगे डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी अपना कोकोनट मिल्क, विच इज़ अनदर इंग्रेडिएंट दैट्स सुपर हाइड्रेटिंग। आपने अनस्वीटेंड कोकोनट मिल्क लेना है, तो आपने स्वीटेंड कोकोनट मिल्क नहीं लेना, अनस्वीटेंड कोकोनट मिल्क लेना है, और उसको अपनी दही में मिलाएंगे। All these are so not graceful to do on a video, because in my bathroom there's so much more graceful to do, and what I'm going to do is just kind of mix the two ingredients together. कोकोनट मिल्क और दही को मैं अपने बोल के अंदर इस तरह मिक्स करी हूँ। यूजली लाइक आई सेड मैं अपने बाथरूम में करी होती हूँ, तो इट्स वेरी फनी व्हेन आई हैव टू डू इट ऑन लाइक वीडियो। सो दोनों कप्स हो गई है आपके। अब मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिए हैं अबाउट 2 tablespoons ऑलिव ऑयल के। आई वांट टू मिक्स दैट इनटू दिस, यू कैन सी इट गो इन, ठीक है। और उसके बाद मैं लूँगी अबाउट 2 big tablespoons ऑफ हनी। सो आई एम जस्ट गोना ऐड दैट into this with a little, I'm using like a big spoon here, and I'm just going to add that to my mixture. 2 big tablespoons equivalent of मैंने उसको अपने मिक्सचर में ये ऐड किया है। Next I'm going to take some rose water, because I feel कि इसकी smell to be honest इतनी अनप्लेजेंट सी होती है, दही की होती है, अगर आप लगाएंगे तो यू फील अ बिट इकी। सो आई पुट अबाउट लाइक 2 tablespoons ऑफ रोज वाटर इन देयर एज वेल, जस्ट टू गिव मी सम रिलीफ फ्रॉम द स्मेल, यू नो, इट ऑल्सो स्मेल्स गुड। बालों से भी जब आप धोएंगे तो होपफुली इट विल हेल्प टू मास्क द हिडियस स्मेल ऑफ दही, जब दही फेंट के सर में लगती है। और अदर देन दैट आई एम गोइंग टू ऐड जस्ट 2-3 drops ऑफ लैवेंडर ऑयल, 2-3, चलो 4 ऐड कर ले। टू नाउ मिक्स दिस मिक्सचर टुगेदर। अब मैं आप लोगों के सामने बोल में मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। और ये इस तरह की कंसिस्टेंटली, ज़रा पतली सी कंसिस्टेंसी होती है इसकी, कुछ सब फेंटा हुआ होता है, बिकॉज आई वांट इट टू बी थिन। अब इसको आप अच्छी तरीके से जब मिक्स कर लें
तो द ट्रिक इज़ कि आपने इसको बालों में लगाते वक्त मसाज करना है, ठीक है। जब मसाज करेंगे बालों में, पूरे बालों के रूट से टिप तक लगाएंगे। स्कैल्प पे इतना नहीं आपने लगाना, स्कैल्प इज़ नॉट अ तेल, तो स्कैल्प पे मत लगाना शुरू कर दीजिएगा। इट कैन एक्चुअली कॉज यू टू it's not great for the scalp. You don't want product build up on the scalp, so you want to put it at the actual hair. So आपने बिल्कुल अपने पूरे बालों में लगाना है और उसको मसाज करना है। जब ये मेरा हेयर मास्क बन जाता है, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली घंटा डेढ़ भी लगा लेती हूँ। जब बच्चा सो जाता है, मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं, मैं नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम पे होती हूँ, तो मैं किसी और को कहती हूँ कि मेरे सर पे लगाएं, उसको अच्छी तरीके से मसाज करें। मेरे पास एक्चुअली पेशेंस नहीं है, सो इफ़ यू हैव समवन हु काइंड इनफ टू डू इट, समटाइम्स माय मम विल डू इट, माय रोज विल डू इट, एवरीबॉडी नोज हु वर्क्स विद मी and it's like family, so they do it. Sarah, Rose will do it, my mom will do it. I cannot ask my husband to do it because every time he smells it, he's like, please stay far away from me whenever you're doing these DIYs. So you can ask someone to do it for you. अगर और कोई नहीं है और खुद ही करना है तो फिर बाथरूम में खड़े होके, क्योंकि the only thing is जब आप मास्क लगा लेंगे that it does trickle down a little bit, so you want to put a towel around your neck and maybe a shower cap will help if you can put all your hair in there. I feel like once I put these on, getting all of my hair under anything is difficult, so I just usually will put a towel and know that I'm just going to get dirty, and I'm just going to make sure that I shower after. Now hair mask के बाद एक बहुत ज़रूरी बात है, people tend to really overwash their hair, and I think that also happens because a lot of times people like scalp धोनी है, इसको आपने अपने पूरे बालों पे लगाना है, and one wash should be enough. Don't try to over scrub your hair because then you're losing all the great moisture, right, that you've added from this mask. So that is the recipe for this mask. I thought you guys would enjoy it, and I was really happy with my hair today. So I started, and I was about to go out, so I thought, why not quickly shoot this recipe and show you guys, because I put it after a long time yesterday because I've had no time to even breathe during season. And the minute I put it on, I said, I need to share. And can you see how nice and like shiny my hair looks? And right now I don't have any product on top of it. It's just blow dried hair, and it's just really looking nice and shiny. So again, please try this mask. Let me know. I know you guys love my DIYs, and I love sharing them with you because it's such an easy way and wholesome way of doing beauty treatments at home. I love doing them at home. तो मुझे पता है कि आप सबको बहुत पसंद आता है. Please guys, keep liking, sharing and subscribing to the channel if you guys want to see more. And we were talking with the YouTube team, and we were looking at statistics and realizing that there's still a lot of people who regularly watch the channel that are not subscribing. Please subscribe. It really helps us to grow our channel, to do more videos, to bring more content to you. So please subscribe to our channel. We're looking forward to bringing so much more to you. Please नीचे लिखें जब आप ये ट्राई करें तो मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा इसका रिजल्ट. आप इतने सारे लोग मेरे DIYs यूज़ करके शेयर करते हैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, हमारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो प्लीज़ नीचे ज़रूर बताइएगा what you want to see more of. If you want to see more DIYs on what different topics. So I'm listening to you guys. Keep mentioning that down there. Also tell me how you like the video, if you feel that my hair looks nice and shiny. Looking forward to bringing lots more to you, and I shall see you soon again. See ya. Bye.